Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to do this speaking things. Again, I have told each and every one of you when you are listening to Dr. BKM's videos, it is very important to listen to the videos till the end, because in the end there are certain things I speak about which are very important. Like in speaking, if I say ending the role play is the most important thing. Ending the role play means summarizing the role play, that you tell the patient that I would like to highlight the key points of our conversation, that this is very important for you, that is very important for you. So you need to highlight, you need to summarize the task. It is very important. That is why when you listen to our videos, then also it is very important that you should listen to the videos till end. And then let me speak for these videos. And first of all, I'm going to go to today's role play. So today role play is that we are in the hospital. Your patient is 55 years old. She has end stage renal disease. So the patient, this is kind of a very difficult task in the exam. क्यों? एंड स्टेज रीनल डिजीज मतलब पेशेंट बहुत ही स्लो होगा क्योंकि वो एंड स्टेज पे है। तो ऑब्वियसली आपको उसको बहुत सिंपेथाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी वॉइस प्रैक्टिकल तो रहनी चाहिए, एट द सेम टाइम इट शुड बी लिटिल बिट सिंपेथेटिक एज वेल। मतलब आप बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल भी नहीं हो सकते हो, आई एम वेरी सैड टू हियर दैट, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू बी लिटिल sympathetic to the patient, that I'm really sorry to hear that this happened with you, and we are here to help you. We assure you for the best services. We all are here to assist you. ऐसी चीजें बोलना जरूरी हो जाता है. आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट. आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर condition, but don't worry, we are here to help you. So words like this really encourage the patient in the best possible way. And please subscribe our channel if you have not. Please share it with your friends, and our contact number is 7696734256 for the best videos. So now I'm going to do this role play. 55-year-old patient and stage disease. हेल्थ इज स्टेडीली डिटीरियोरेटिंग. स्टेडीली मींस लगातार, जैसे कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. स्टेडी का मतलब लगातार. द पेशेंट इज एन इन पेशेंट इन योर रीनल वार्ड. इन पेशेंट का मतलब वहीं पे है, इन पेशेंट है रीनल वार्ड में, यानी हम रीनल नर्स हैं, यहाँ पे रीनल वार्ड के नर्स हैं. एंड यू नोटिस शी अपीयर्स लोनली एंड डिप्रेस्ड. ही शी रिक्वायर्स डायलिसिस. सो मेक श्योर पेपर में आप ही या शी में से एक चीज को लो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही या शी में से एक चीज को लो. 3 times per week and is a candidate of for a renal transplant, और वो renal transplant करवाना चाहता है. और थ्री टाइम्स डायलिसिस होती है उस पेशेंट की. सो यू कैन वेल इमेजिन कि वो पेशेंट कितना डिस्ट्रेस्ड लोनली फील कर रहा होगा. एंड ऑल्सो वेटिंग फॉर, जैसे हम अपने ओईटी के रिजल्ट की वेट करते हैं, ओईटी की वेट करते हैं, ओईटी एग्जाम की वेट करते हैं, तो हम इतने एंशियस हो जाते हैं. सोचो जो पेशेंट मतलब एंड स्टेज पे और उसको रीनल ट्रांसप्लांट चाहिए, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी. मतलब आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. तभी आप अच्छे से आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे टास्क को. अगर आप समझोगे नहीं, ओईटी में सिर्फ अपने एग्जाम की चिंता करते रहोगे और नर्स की तरह अच्छे से रोल प्ले ही नहीं करोगे, तो फायदा क्या. और ये रोल प्ले भी ओरिजिनल कैम्ब्रिज बॉक्सिल लैंग्वेज असेसमेंट वालों का टास्क है. तो दीज आर द काइंड ऑफ द टास्क दैट कम्स इन द एग्जाम. आस्क द पेशेंट टू टेल यू हाउ शी इज फीलिंग. पेशेंट से पूछना है कि आप बताओ. दैट मीन्स आई एम आस्किंग द पेशेंट टू टेल मी हाउ आर यू फीलिंग. तो इनको पहले ही चेंज कर दिया करो. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आप इसको टास्क को, और हमेशा फर्स्ट को पूरा लिखना है. गुड मॉर्निंग, माई नेम इज दिस. इन माई केस इट इज बीकेम. सो गुड मॉर्निंग, माई नेम इज बीकेम, आई एम अ नर्स, एंड आई एंड सॉरी, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन. आपको यहाँ पे नाम से ही एड्रेस करना चाहिए क्योंकि वो आपका पुराना पेशेंट है, तो आपको पता होगा. सो सिंपल, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, आई एम बीकेम, आई एम योर नर्स फॉर द डे. सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे. तो यहाँ से टास्क शुरू होगा. ऐसे मत कहो, मतलब मैं चाहता हूँ इसको भी आप मत बोलो लोनली और डिप्रेस. तो वो कहेगा आई एम नॉट फीलिंग गुड. तब उसको कहो यस आई कैन नोटिस दैट मे बी यू आर फीलिंग लिटल लो टुडे. अब ये मत बोलो लोनली एंड डिप्रेस्ड, ये वो अपने आप बताएगा. ये फीलिंग्स हैं. डिप्रेस्ड फीलिंग आप सामने से नोटिस नहीं कर सकते. आप ऐसे नहीं, ये छोटी छोटी गलतियां तो होती होंगी पेपर में. अगर मैं कहूँ यू सीम टू बी लोनली एंड डिप्रेस्ड, ये कोई बात थोड़ी बनी. वो लोनली वो है, वो तो पहले भी लोनली होगा. और डिप्रेस्ड वर्ड आप कैसे पता लगा सकते हो वो डिप्रेस्ड है. आपको सिर्फ ये कहना होता है आई कैन सी दैट यू आर फीलिंग लिटिल लो टुडे. सो आई एम जस्ट गोना यूज द पेजेस. I will really require these pages, to be honest. Yeah, let me open the pages for you because I need to write side by side. Yeah. So now I am here at my task. Yeah. So here is the task. So first line paper में फर्स्ट लाइन जरूर लिखनी है, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, आई डोंट केयर. आप सबको ये लिखना है. गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन,
तो इससे आपको ये भी पता होगा आप टास्क को ही में चला रहे हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, माय नेम इज बीकेम and I am assigned nurse for you today. So, first of all, I would like to know how are you feeling today? ये लाइन आपको लिखनी है हमेशा, चाहे कोई भी टास्क हो, आसान हो मुश्किल हो, आपको ये लिखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है। जैसे अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने लिखा नहीं था, तो मेरे से भी नहीं बोला गया, इवन आफ्टर हैविंग सच गुड इंग्लिश और आई एम ट्रेन टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट आई इफ आई डू नॉट राइट द फर्स्ट लाइन देयर आर सर्टेन थिंग्स आई एम ऑटोमेटिकली मिस हो जाती हैं। सो बेसिक्स को फॉलो करना है, बेसिक्स को फॉलो करने का मतलब लिखना है, ये पार्ट है हमारी स्पीकिंग का। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, माय नेम इज बीकेम एंड आई एम ऐसा, क्योंकि जब आप लिखोगे आपको गलती भी पता लगेगी, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो जब आप लिखते हो। अगर मैं उसके बाद, अब जब मैं ये लिख रहा था कि माय नेम इज बीकेम, तो मैं यहाँ पे सोच रहा था यार मैं रीनल वार्ड में, ये पेशेंट पहले से ही है, क्या पता मुझे जानता हो, क्या पता मुझे नहीं जानता हो। तो अगर यहाँ पे मेरी नजर जाएगी यहाँ पे देखने में कहीं वो मुझे जानता तो नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखा वो मेरे को जानता है, वो मेरे को जान भी सकते हैं और नहीं भी, तो इंट्रोड्यूस करना तो मेरा काम है। So good morning, Mr. John. My name is Beacon and I am assigned nurse for you today. So first of all, I would like to know how are you feeling today? Well, nurse, I'm not feeling good. Well, to be honest, Mr. John, I can also notice that your mood is little low. Could you please tell me what is the reason behind this? फिर वो बताएगा, nurse, I do not want to talk. See, I would like to encourage you to talk about any, अब fear word को मत use करो, about any problem that you have regarding yourself or regarding your condition. I am here to help you only. Inform the patient that without dialysis he would suffer more. Okay, so वो बताएगा आपको problem. The problem is that nurse, I have to undergo dialysis 3 times a week. It's a painful procedure. Moreover, I feel emotionally distressed after this procedure 3 times a week. So I want to stop this procedure. वेल आई अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन। अब ये नहीं कि सीधा अपने पॉइंट को बोलना है, प्लीज समझो यही मेन पॉइंट्स हैं, यही ओईटी चाहता है। वेल आई अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन दैट इट इज हार्ड फॉर यू, इट इज वेरी हार्ड, इट इज हार्ड फॉर यू, वेरी हार्ड नहीं, वेरी हार्ड भी उसको मतलब पेनफुल लगेगा, इट इज हार्ड फॉर यू, बट एट दिस टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरगो दिस प्रोसीजर। इट इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर फॉर यू। इफ अब उस पॉइंट को बोलो, इफ यू विल नॉट अंडरगो दिस प्रोसीजर यू वुड सफर इवन मोर, ऐसे बोलना है। reassure the patient that there is, so but nurse, what is the benefit of this procedure? I am on the end stage renal disease, anyhow I am not going to get a patient, a renal transplant person, I'm not going to get kidneys anyhow. So I'm feeling really lost, I just don't, I have lost the hope. Well, I reassure you that there is always hope that a donor will be found in time. Please do not give up. Please continue with the procedures which doctor have told you, because this is a life-saving procedure for you and donor will be found soon. There is always a hope. But nurse, I really want that if by chance something happens, then you should not give me any treatment. Well, I would like to suggest you that you should consult a counselor who will support you in taking your decision, not for resuscitation. Not for resuscitation मतलब वो कह रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है मुझे बचाओ मत, तो आपको कहो, first of all I would like to tell you that this is not a nice decision, and I also would suggest you that a counselor should be consulted who will help you in making the decision to be listed as not for resuscitation. So at least you should talk to him before making a decision. ये टास्क थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए आपको बोलने में परेशानी आई, तभी आपने आज स्पीकिंग की बात की, बट इट्स अ गुड चांस फॉर मी टू टेल यू अबाउट स्पीकिंग। प्रोवाइड रीएश्योरेंस, अगर ये पॉइंट दिया है रीएश्योरेंस का या नहीं दिया, ये लिखना जरूर है, दैट इफ मिस्टर जॉन यू डू नॉट वांट, if you want not, if you don't want to undergo resuscitation, you have to give this request in writing. That means that we cannot accept your respect verbal, your wish verbally, so you have to give us in writing. And it is hospital policy that once you give us the consent we will respect your decision, no matter what decision you take, because primarily patient has the main right to take the decision.
And also, I would like to tell you one important condition, that while giving us the consent in writing, your family member should be present. तो मतलब अकेले में आप कंसेंट नहीं दे सकते, कल आपके फैमिली वाले कहीं आपने सेव क्यों नहीं किया, तो योर फैमिली। तो ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अब मैं आपको दोबारा पूरा बोल के दिखाता हूँ। और अब मैंने आपको टास्क वैसे तो एक बार बोल दिया, अब देखो फ्लो में कैसे जाएगा। और टाइम को भी नोट करते हैं। अभी मेरी वॉच जो है 14:44 दिखा रही है, तो मुझे 19 तक बोलना है, 19 की बजाय 20 तक। तो देखते हैं कैसे चलता है। Good morning, Mr. John. My name is BKM and I am assigned nurse for you today. So first of all, I would like to know, how are you feeling today? Well, nurse, to be very honest, I'm not feeling good. I'm really, kind of upset. Well, Mr. John, I totally understand your condition at the moment. So I understand that you are having a condition which is end stage renal disease. So I can understand that sometimes you may feel low. So you can express your feeling. I'm here to listen to you. Well, nurse, what should I express? Your doctor told me that it's very important to have this renal transplant. And you guys have been trying to find the donor, and you have not found the donor. Moreover, I have to undergo dialysis 3 times a week. It's very hard. Well, Mr. John, I totally respect what you are saying, and I appreciate that you are very strong. And also, undergoing dialysis 3 times a week, obviously, it is bit painful and bit hard, but it is a life-saving procedure for you. At this point of time, this procedure is very important for you. Please try and understand that we cannot stop this procedure because it is a life-saving procedure for you. But nurse, I don't think so now donor would be found. I am at the end stage and there is no point of undergoing dialysis. I think I should give up. Well, you should not take this decision, Mr. John. I would like to tell you that if you will not undergo dialysis, then you will suffer more. That means dialysis is not only saving your life, but it is also maintaining your condition. So if you do not undergo this dialysis procedure, your condition will deteriorate. That means you will suffer even more. So please understand that dialysis is very important for you at the moment. And moreover, I would like to tell you that there is always a hope that donor will be found in time. So please do not give up. I would really like to encourage you, and I have seen you that you are very strong, and you should not give up. Well, okay, nurse, but it's not about giving up, but at the same time, taking pain, and every day my family members are coming, and it's just so emotionally overwhelming. I don't know, but I really want you that don't don't treat me. If there is anything wrong, then I would not like to take further treatment. If something wrong happens, let me die. Well, I understand, Mr. John, but I would really request you to have a counselor before you make any decision. If you will talk to the counselor, he will listen to you nicely and will help you to take the decision. So please, before taking any decision, I would really like to encourage you to have a counselor. Okay, nurse, I will talk to the counselor, but my decision is almost final at the moment that I don't want any resuscitation. If something bad happens, let me die. Well, okay, being a nurse, I can only reassure you for this one thing, that we will always respect your decision. Being nurses and being doctors, we all are supposed to respect any decision you take. But again, I would like to suggest you, first of all, you should consult a counselor. And if after that you still feel the same, then you can give us a request in writing, because we cannot accept this request verbally. So you have to give this request in writing. Would that be fine? Well, okay, nurse, then I have made the mind, so I will. Okay, and also there is one more thing, that when you give us the request, at the same time, your family members should be present, because it is very important that they should be present while taking this decision. So I would really encourage you that you not only talk to the counselor, but also talk to your family as well. So it is very important before you make any decision. Well, okay, nurse, I will talk to my family. Okay, well, that's pretty much from my side, Mr. John. And also, I am fixing your appointment with a counselor. So do you think I should fix your appointment for tomorrow with the counselor? Yes, nurse, you can. Okay, Mr. John, I would be leaving now, but I would like to tell you again that dialysis is a very important procedure for you.
It is not only life-saving procedure, but it is also maintaining your life in a good way. If you stop this procedure, you will suffer even more. And I have fixed your appointment with the counselor for tomorrow. So he will come to you and meet you and will help you in taking your decision. And if you make decision, then you have to give us the consent in the writing, and your family members should be present. I hope everything is comprehensive, everything is understandable. Yes, nurse, it is. Okay, then I am leaving. Please take care of yourself, Mr. John, and have some rest. Okay, nurse. Thank you. Take care. That is how you complete the task, that you repeat the task, you make it comfortable for the person, so that everything is revised in the last 30 seconds. So that is how you complete your time as well. And this is a very difficult task, and I would encourage each and every one you to listen to this task again, maybe 2 or 3 times. And again, if you like the video, please like it, share it with your friends, and subscribe our channel. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.